Bismillahirrahmanirrahim. I, Miss Mehwish, the chemistry lecturer of O-Levels and A-Levels. So today our topic is applications of electrolysis. Application means in which field of life we can implement the principles of electrolysis, how electrolysis takes place in various fields of life. First of all, the content. The content consists of applications of electrolysis, purification, electroplating, cells and battery, chemical to electrical energy, reactivity, series of metals. We will discuss all these key points one by one in the upcoming slides. Although there are so many applications of electrolysis, yet we will discuss only two applications over here. Very first is purification of metals and the second one is electroplating. Purification of metals and electroplating are the two applications which we will discuss over here in details in the next slides. Very first application of electrolysis is purification of metals: copper, iron, silver, gold. But here we will quote the example of copper. Copper metal could be purified by electrolysis. How? Look at the diagram. The diagram consists of two electrodes, impure copper anode, pure copper cathode. Cathode carry negative charge while anode carry positive charge. So what will happen at the respective electrodes? Impure copper will act as an anode and hence on the other hand pure copper will act as a cathode. At the cathode, reduction takes place and copper 2 ions are deposited as copper with valency 0. At cathode, reduction takes place. Move towards the next electrode, that is anode. Oxidation takes place at anode. Copper compound will oxidize and hence transform into copper plus 2 ions in the form of copper sludge. In this way, impure copper transform into pure copper and deposit at the cathode, and purification carries on. Another very interesting application of electrolysis is electroplating. In our daily life, we have so many examples of electroplating, like artificial jewelry, the rings, the anklets, the bracelets. They all are coated with or electroplated with different metals and their covering. So here let's quote the example of electroplating of copper on the surface of metallic spoon. Before moving towards the explanation, look at the diagram. The diagram consists of two electrodes, a copper plate and metallic spoon. At the cathode, spoon will be hanged and spoon will act as a cathode. On the other hand, copper will act as an anode. Remember that thing. The material which is to be electroplated or which you want to be electroplated should always be hanged at cathode side and hence will act as a cathode. On the other hand, the metal which you wish to electroplate will be at the anode side. Ultimately, oxidation takes place from the copper side and copper side electrons will move towards the cathode. And what is the cathode over here? It's the spoon. So electron will move, copper will move in the form of copper ions from anode towards cathode and will be deposited on the surface of spoon. At the cathode, spoon will be hanged and copper ions will be deposited as copper layer on the surface of spoon because reduction takes place. Gain of electrons takes place. In the cathode side, copper carry plus 2 charge, while after the gain of electron, it will transform into copper with 0 oxidation state. At anode, oxidation takes place. Copper with 0 oxidation state and in solid form will transform into copper plus 2. Plus 2 means it have lost
two electrons, and hence ultimately oxidation takes place. Another very interesting topic, that is how chemical energy could be converted into electrical energy, is by using cells and battery. First of all, what is the difference between cell and battery? Actually, cell is a device which converts chemical energy into electrical energy, while on the other hand, a collection of cells converting chemical energy into electrical energy is called a battery. Cell is a singular thing, while battery is a collection or plural thing. A combination of cells are used to convert chemical energy into electrical energy. Now, a question arises here, that how brighter the bulb is depend on the difference of reactivity series of two metals: potassium, sodium, calcium, lead, tin, iron, copper, silver, and gold. How far they are from each other and how they will. So, what to remember in this regard? As potassium and gold, they are far apart from each other. Potassium is most reactive, while gold is least reactive. So, whenever we use two electrodes made up of potassium and gold, the bulb will glow brighter. Reason is that more further the metals which are being used as electrode, more glowing will be the bulb. An interesting way to crack the reactivity series is, please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. Please means potassium, stop means sodium, calling means calcium, me means magnesium, aluminium, careless carbon, zebra zinc, instead iron, try tin, learning lead, how hydrogen, copper, saved silver, gold. So I guess this is the most easiest way to crack the reactivity series of metals. Now look at the diagram. The diagram consists of two electrodes having voltmeter represented by capital V. Magnesium is acting as a cathode while copper is acting as an anode. Electrolyte solution consisting of dilute sulfuric acid. In the electrode series, magnesium has electrode potential minus 2.35, while silver has 0.80 and copper has 0.34. Magnesium and copper both have different electrode potential. So both acting as an electrode will make more electrical energy as compared to other metals which are nearer to each other. So ultimately, bulb will glow brighter whenever the transforming electrodes are magnesium and copper. What to remember in this regard? The whole concept is, more further the two metals which are acting as an electrode in the metals reactivity series, the more will be the production of electricity, more will be the polarization. So all in all, what we have to remember is that the object which is to be electroplated will be act as a cathode. Like we want to electroplate a spoon, so spoon was acting as a cathode. On the other hand, object which we wish to be electroplate will be act as an anode. Like if we want to electroplate the cathodic spoon with gold, so gold will act as an anode and spoon will act as a cathode. So all in all, class हमने क्या सीखा? What are the applications of electrolysis? सबसे पहली एप्लीकेशन थी प्यूरिफिकेशन. हम मेटल्स को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ तो वो एज इट इज़ इतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं होती. उनकी प्रॉपर प्योरीफिकेशन की जाती है, प्रॉपर केमिकल मेथडोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है. तो वो मेथडोलॉजी क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस. हमने यहाँ पे कॉपर की प्योरीफिकेशन की, तो आपने यहाँ पे कैमरिश पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है? जिस मेटल की प्योरीफिकेशन करनी है उसका एनोड लेना है. इम्प्योर मेटल कॉपर है तो हमने इम्प्योर कॉपर एनोड लिया था. ठीक है. इनऑल होगा क्या? ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, ठीक है, और रिडक्शन कैथोड पे होती है.
इम्प्योर एनोड जब आपने लिया तो वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन से इम्प्योर कॉपर मूव करेगा प्योर कॉपर के थोड़ की तरफ, वहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा और उसकी प्योरिफिकेशन हो जाएगी। अब कैथोड वाली इक्वेशन में देखो, कॉपर की वैलेंसी पहले +2 थी, फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और कॉपर 0 वैलेंसी में चला गया। +2 से 0 में जाने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसी तरह एनोड की इक्वेशन में कॉपर की पहली वैलेंसी रिएक्टेंट साइड पे 0 थी, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फ्री स्टेट में मेटल्स की वैलेंसी 0 होती है। 0 से +2 में जाने का मतलब है प्रोडक्ट साइड पे कॉपर की वैलेंसी +2 है, तो 0 से +2 में जाने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है। सो ऑल इन ऑल हम कॉपर की प्योरिफिकेशन इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करके कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ी कि हम जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं सबके ऊपर कोई ना कोई मेटालिक लेयर लगी होती है, या हम जो भी यूटेंसिल स्पॉट्स घर में यूज़ करते हैं उन सब के ऊपर मेटालिक लेयर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई हुई होती है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो एक स्पून हैंग हुआ हुआ है, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया। आपने जिस बर्तन के ऊपर लेयरिंग करनी है उसको हमेशा कैथोड साइड पे रखना है, और जिस मटेरियल की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या लेयरिंग करनी है उसको एनोड पे रखना है आपने। जैसे मैं इस स्पून को, इस मेटालिक स्पून को गोल्ड का करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ इस स्पून के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाए गोल्ड की, सोने का चम्मच बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस स्पून को मैं कैथोड पे रखूँगी और गोल्ड के इलेक्ट्रोड को एनोड वाली साइड पे हैंग करूँगी, वायर्स लगाऊंगी, बैटरी देन की देन ऑल दैट सारा सेटअप प्रिपेयर कर लूँगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, स्पून के ऊपर सारा का सारा गोल्ड डिपॉजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिडक्शन कैथोड पे होती है। सारा का सारा गोल्ड इलेक्ट्रोड मेल्ट होके इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में स्पून की तरफ मूव करेगा और स्पून की सरफेस के ऊपर आके चिपक जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा। राइट क्लास। उसके बाद हमने पढ़ा सेल्स और बैटरीज में क्या डिफरेंस होता है। डेली लाइफ में ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने देखा होगा सेल क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्टेबल टॉयज़ जितने भी होते हैं, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जैसे टीवी कंट्रोल है उसमें भी सेल्स यूज़ होते हैं, एसी का कंट्रोल है उसमें भी सेल्स यूज़ होते हैं। सेल एक्चुअली क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी टॉपिक की एक्सटेंशन है रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। आपने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक दफ़ा माइंड में क्रैम कर लेना है, रटा लगा लेना है रिएक्टिविटी सीरीज़ का। देखिए मैंने ईजीएस्ट सोल्यूशन यहाँ पे पेस्ट कर दिया स्लाइड्स में। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्ड गोल्ड। इसको 4-5 दफ़ा आपने पढ़ना है, उसके बाद देखना आपकी फिंगर टिप्स पे ये सारी मेटल्स की सीरीज़ आ जाएगी। और ये भी याद रखना है कि नीचे वाली सारी मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, हाइड्रोजन ये सारी लीस्ट रिएक्टिव हैं और ऊपर वाली सारी मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव हैं। अब होगा क्या, जो मेटल जितनी एक दूसरे से दूर होगी, जैसे अगर हम पोटेशियम और सिल्वर के 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं तो बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। अगर हम कॉपर और सिल्वर लेते हैं तो पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। आई होप क्लास ये ईजीएस्ट वे था समरी को प्रेजेंट करने का, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी स्लाइड में या कहीं पे भी आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रही, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आपको कोई भी लगता है कि आप कोई टॉपिक मुझे बताना चाहते हो कि हमें इस टॉपिक पे स्लाइड शो चाहिए या लेक्चर प्रिपेयर हुआ चाहिए, आप मुझे टॉपिक सेंड करो या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, राइट। Now, the most important section of the slideshow is what are the questions which are important for Cambridge point of view. Draw the label diagram of electroplating of copper on the surface of the spoon. Electroplating is used to plate the surface of metals to avoid corrosion. Write the cathode and anode equation of mentioned electroplating reaction of question number 1. Magnesium and lead can be used as an electrode in electrolysis. What will be the effect on brightness of the bulb during electrolysis? So that was all about today. Applications of electrolysis, how electrolysis is being used in our daily life, and how this topic is important for Cambridge point of view. So stay tuned and subscribe my channel, share the videos, and obviously press the bell icons to all so that you may get the updates of my videos. I will obviously upload for all of you
Well, thank you for your positive feedback, for your likes, views, and shares. Allah Hafiz.